फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. Another day, another win for Chennai Super Kings team. This time around, it was an easy one. CSK have managed to win it by 63 runs, a great win for CSK, but was GT ever in the scene? That's a big question. Well, let's hear it out from Samir Rizvi and Kanav Bali. What all went wrong with Gujarat Titans, because they never seemed to be there in the scene in this match against CSK. ये एक रिपीट कह सकते हैं था 2023 फाइनल का. लास्ट ईयर हमने देखा था फिनाले में इट वाज जीटी वर्सेस सीएसके. पीपल वर क्वाइट एक्साइटेड, दे वर एक्सपेक्टिंग अ थ्रिलर. ऐसा कुछ नहीं हुआ. लास्ट के 6-7 ओवर्स वर merely a formality because CSK had already got the game. But you know, there were some moments where GT could have managed to give a tough competition. First one was Shubman Gill's batting, then there was a Sai Sudarshan's start, and then David Miller, of course. But where did you find कि ये मैच आज CSK जीतेगी, GT के पास नहीं जाने वाला है? टॉस पे चेन्नई पे और चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग पे. I mean, we had discussed before the match. Kanav was there, and there were predictions. There was wish list that Kanav said कि तुम्हारा wish list रहता है, तुम्हारा prediction नहीं रहता है. मैंने कहा था CSK जीतेगा, 200 मारेगा, and 206 के ऊपर मार दिया उन्होंने. नहीं, the thing is that they have a very strong batting lineup, and compare it to Gujarat Titans. I mean, they are nothing. They are nothing in front of CSK. On top of that, you have Mahendra Singh Dhoni, the smart captain, the legend. Somebody who has left a lot of legacy, a huge legacy. तो यहाँ पर शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी के मैच अप्स करेंगे तो कोई चांस नहीं है गुजरात टाइटंस का. बट देन it was all Chennai Super Kings batting, and especially that Shivam Dube. What a player, man! What a player! And Rachin Ravindra. मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था रचिन रविंद्र को इतना जल्दी अडॉप्ट कर लेगा. एंड देन यू हैड समवन लाइक समीर रिजवी. Everything was falling in place here. Everything was falling in place, and suddenly they have become one of my favorites for the finals. And कल हम जिसकी बात कर रहे थे शेड्यूल की कि एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट है, तो शायद यही हो सकती है फाइनल की. चेपॉक पे चेन्नई सुपर किंग्स खेलेगी अपना फाइनल, और शायद सेमीफाइनलिस्ट बनेगी या तो विनर फिर से बन जाएगी. तो फॉर मी इट वाज प्योर बैटिंग. गेंदबाजी तो है ही, बट बैटिंग उनको सुपरसीड कर लिया. Definitely, you know, if you see Chennai Super Kings batting today, Rachin Ravindra, oh my God, that player has got big, ability, or what do we call? He's got class, he's got, precision, he's got skill. And Rachin Ravindra was unstoppable. I was just waiting for his 50. Unfortunately, that didn't happen today. He got stumped. Then Ruturaj Gaikwad also made 46 runs. Then, obviously, Shivam Dube. What CSK have made Shivam Dube, that's going to be a good case study kind of, because जब तक CSK में नहीं थे शिवम दुबे, कोई चर्चा ही नहीं थी शिवम दुबे के बारे में. जब से वो CSK में आए हैं, especially last year, this year, he's just unstoppable. And unstoppable not in terms of, the way he's batting, unstoppable also in terms of, he's carrying the responsibility when he's been put in tough situations. He's been used as an impact player, and he's definitely putting an impact in the game for CSK. If you have to sum this whole batting unit of Chennai Super Kings team, how will you sum it up? Surma, I don't think it's only Shivam Dube. I think any player who does not do well in any other IPL team, he comes to CSK and he becomes a champion player. That has been the case that we have been seeing in the last many years. Now Shivam Dube, अजिंक्य रहाणे ले लीजिए आप दीपक चार पहले दिल्ली में थे, और कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो आए हैं. मुस्तफिजुर रहमान, वो भी इतना नहीं चले. बाकी आईपीएल टीम में हैदराबाद में एक टाइम शायद चले थे, हैदराबाद थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेकिन चेन्नई में आके हर प्लेयर पता नहीं क्या है, क्या वो रोल क्लैरिटी है, क्या वो MS धोनी इफेक्ट है, क्या वो स्टीफन फ्लेमिंग का इफेक्ट है, पर कुछ ऐसी चीज है कि हर प्लेयर जो बाकी टीम में
खोया रहता है ना, he is lost as to what is my role, what do I need to do. He comes to CSK and he gets a designation, आपका नाम ये है और आपका काम ये है, and that's done, and that is that player's job, and he does that throughout the tournament. बस फॉर्म की बात है, फॉर्म आ गई, he will do his job and then they'll get a trophy. This has been the case with CSK. शिवम दुबे आप देख लीजिए, आरसीबी में थे, बॉल सिर्फ ऊपर जाती थी उनकी, दूर नहीं जाती थी. हमने देखा था एक दो इनिंग्स थी जो वो काफी अच्छी आरसीबी से भी खेले थे, लेकिन आफ्टर कमिंग टू सीएसके, रोल क्लैरिटी, दैट कॉन्फिडेंस, और यार एक साइकोलॉजिकल भी होता है ना, अगर आपको एमएस धोनी बैक कर रहे हैं तो आपको खुद लगने लगता है मेरे में कुछ तो है. अगर महेंद्र सिंह धोनी को लगता है कि मैं प्लेइंग लेवल में रह के टीम की हेल्प कर सकता हूँ, तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है. बट इट्स नॉट ओनली शिवम दुबे यार, इट्स जिंके रहाणे T20 प्लेयर पिछले साल. I was at the Wankhede Stadium when CSK played their first match. It was Mumbai versus CSK. At Wankhede, I was in the press box और अजिंक्य रहाणे ने जो मारा था उस मैच में, and everybody was shocked because अजिंक्य रहाणे, we all know the test player अजिंक्य रहाणे, वो Yeah. येलो जर्सी पहन के उनको पता नहीं क्या हो गया, हर स्टैंड में एक छक्का, इतनी तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. So I think that is the CSK effect, and that is exactly what makes CSK a champion team. वो आपको ऐसे प्लेयर्स जो आपको लगता है कि यार ये क्यों लिए हैं इन्होंने, वो आके ऐसा Yeah. कुछ कर जाते हैं जो आप सोचते हैं कि बाकी टीमों ने क्यों नहीं लिया इनको. तो ये इफेक्ट है सीएसके का, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल दीस प्लेयर्स यार, दुबे, रहाणे, मुस्तफिजुर रहमान, दैट दे हैव फाउंड होम. They know a team where they can play to their full potential. They know the role clarity. They know what they need to do and what they don't need to do. That is exactly Yeah. what CSK does with you. So, a champion team here. I don't think there are any words left to describe CSK in that regard. Absolutely, it's been a case from past so many years that we've been seeing how players come to CSK, they become gun players, and then they come to the scene of even getting a place in the Indian team. But not only the Indian team, let's also talk about different players. Someone like Rachin Ravindra. We saw Rachin Ravindra Taus in the ODI format, in the World Cup, and everybody was talking about Rachin Ravindra, what he has got. But I think here in CSK, it's just freedom for him because the way he was batting, he took 20 balls to reach that 46 run mark. Unfortunately, he went out. But those six fours and three sixes that he smashed today, I think it was pure class. It was pure precision and timing of the shots. There wasn't anything that you can pick out and say that, oh, this was by fluke or this was something that he got by chance. Everything was beautifully timed. How do you see this whole setup? Absolutely, everything was beautiful. Rachin Ravindra, I thought he could be that, a typical 50 over or a test cricket or somebody, but then he took T20 cricket like fish takes to water. Beautiful batting. I mean, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया उल्टा जहाँ पर लाइक आपको जैसे T20 क्रिकेट में बैटिंग करनी पड़ती. He played his usual shots, straight drives, classical drives, back foot punches, cover drives, and the shots that the sixes that he came out showed that this guy is made of out of something special, cut out of a different cloth altogether. And New Zealand का definitely future बहुत bright है, and I see her captain in him in the future. Kane Williamson का replacement जरूर है ये, and the way he batted today showed that यार he's here for a long term. शायद वो इंडिया के लिए नहीं खेले, but वो definitely इंडियन प्रीमियर लीग में अपना नाम बना रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में चले गए थे बचपन में ही, और जब उनको मतलब क्रिकेट के लिए ही गए थे, बट यहाँ पर जब आए तो आप देख सकते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में आया. नाउ दिस इज अ बिग स्टेज. बट आई वुड लाइक टू गो बैक टू शिवम दुबे अगेन. आई मीन आपने देखा शिवम दुबे किस तरह से नेगेट कर रहे थे शॉर्ट पिच को. आई मीन ही इज नॉट कंफर्टेबल एट शॉर्ट पिच डिलीवरीज. वो कन्विंसिंगली एक ही शॉट सिक्स जो मारा था, उन्होंने पुल किया था, हुक किया था, वो सिक्स गया. अदरवाइज ही वाज very uncomfortable. But then that trick of negating those difficult deliveries, very it needs a big heart. तो यहाँ पर ही नोज ही इज क्वाइट अ स्मार्ट प्लेयर. ही इज बिकम, ये कुछ इनका दूसरा तीसरा साल नहीं, ये काफी समय से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं. मैं अपनी पुरानी बायलाइन भी देख रहा था कि मैं यार कुछ तो लिखा होगा इनके बारे में, एंड आई हैव रिटन अ लॉट अबाउट हिम ड्यूरिंग रणजी ट्रॉफी. कितना शार्प क्रिकेटर है, ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, एंड ही नोज हिज लिमिटेशंस. ही नोज हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू व्हेन टू अटैक. स्किल, शॉट्स मेकिंग स्किल तो है इनका, पावर, ब्रूट पावर तो है, मगर जिस तरह से वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं, आप उनके इनिंग्स में रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं देखोगे, आप उनके इनिंग्स में बाउंड्रीज नहीं देखोगे, क्योंकि वो Yeah. क्लासिकल बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी आपको, कवर ड्राइव नहीं दिखेंगी, या वो पंचिंग स्ट्रेट ड्राइव थ्रू द थ्रू द ग्राउंड जो जाती है वो नहीं दिखेगा, फ्लिक्स नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा स्लॉग्स.
स्लॉग जो T20 क्रिकेट में चाहिए रहता है, और महेंद्र सिंह धोनी परफेक्टली यूज कर रहे हैं इनको लोअर मिडिल ऑर्डर में। जिस तरह से वो उन्होंने आज भी बैटिंग की, उसके पहले भी बैटिंग की, उनको पता है कि यार इनको जब स्पिनर आएंगे तब लाना है इनको। जैसे अगेन आई वुड से जैसे 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को यूज किया था युवराज सिंह के पहले जब मुरलीधरन के सामने, वैसे ही शिवम दुबे को यूज करते स्पिनर के सामने। ही नोज व्हेन टू यूज द मैन, दैट इज हाउ, आई मीन दैट इज द स्ट्रीट स्मार्टनेस ऑफ दीज बोथ क्रिकेटर्स, Mahendra Singh Dhoni and Shivam Dube. I mean, credit should also go to ऋतुराज गायकवाड़, although ये अभी दूसरी मैच ही है उनकी, थोड़ा तो देना चाहिए, बट ये शिवम दुबे की डिस्कवरी, MS धोनी की डिस्कवरी शिवम दुबे है T20 क्रिकेट में फिलहाल के लिए, मैं कहना चाहूंगा। Well, the picture that we are seeing right now on our screen, I think हमने दोनों मैचेस में बहुत सारे ऐसे फोटोज देख लिए हैं जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ दौड़कर जाते हैं MSD तक, MS धोनी कुछ कहते हैं, थोड़े एक दो चेंजेस करते हैं वो फील्ड में, एंड देन दे गेट विकेट्स और दे मेक सम क्रूशियल डिसीजंस। आई थिंक इट इज देयर इन CSK। आप किसी भी यंग प्लेयर को देख लीजिए, नॉट ओनली गायकवाड़ इज ऑब्वियसली द कैप्टन, बट ऑल द यंग प्लेयर्स एज वेल, they go time to time MS Dhoni से कुछ बात करने के लिए, they make some changes and then they plan the match out. Well, Soumya, we were just talking about the batting and how CSK batters are performing really really well, but we just want to know that picture that came out where everyone was smiling when Samir Rizvi went for those two big sixes. I think that's what's needed from a player who's coming at that number and in the dead overs, to go on for big shots and then just add runs. How big of an asset Samir Rizvi can be for CSK in the coming matches in this tournament? No, he can be a very, very big asset first to start with. He has got that firepower. Okay, जैसे शिवम दुबे को हम जानते हैं, he has got that reach, and now from the last IPL till now, MS has really capitalized on his ability to hit it really long. Samir Rizvi is of that sorts. Right-handed batter who can hit the ball to a very long distance. तो वो कहीं ना कहीं आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो लेफ्ट राइट का, जो इस तरीके से इतना तेज खेल के निकाल सकते हैं मैच को। एंड ही आप यूपी T20 देखो, उन्होंने वहां बहुत रन बनाए, समवेयर अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 455 रन्स in 9 innings in T20 format. That's a lot of numbers, तो वो बहुत T20 क्रिकेट खेल के, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। He understands his game as well and he backs himself. Samir Rizvi backs his ability to hit the ball hard. वरना आप राशिद को पहले स्लॉग करने नहीं जाते हो। First ball in your IPL career and you won't slog at Rashid Khan for a maximum, but he did. He backs his ability and वो 14 रन वो कहीं ना कहीं आपको 200 के पार ले गए। that बाकी बैट्समैन रचन हो या शिवम दुबे हो, they batted really well, but Samir Rizvi's couple of maximums also helped them to go past that 200 mark. So again, a very very talented cricketer who is very promising, और अगर इस तरीके का बैटर आपके छठे सातवें नंबर पे है, then you don't really need to worry. What I'm liking about the CSK batting unit is they have batting till number 10. तुषार देशपांडे भी बल्ला चला सकते हैं, ऑब्वियसली व्हाइट बॉल और रेड बॉल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट इफ नॉट तुषार देशपांडे, टिल 9 यू हैव a good decent बैटिंग लाइनअप, जहाँ पे एक रेगुलर बैटर्स हमने देखा है परफॉर्म करते हुए। दीपक चहर को भी हमने इंडिया के लिए बैटिंग करते हुए देखा है, अच्छा 2-3 मैचेस उन्होंने निकाले हैं, 2-3 50s ही हैज फॉर इन द इंडियन कलर्स। समीर रिजवी कैन हिट द बॉल रियली हार्ड। उसके अलावा शिवम दुबे, एज वी आर सीइंग, ही कैन डू वंडर्स when he is on song. So yeah, it's a very very good lineup, and really happy to see Samir finally making his finally getting his chance and somewhere down the line capitalizing on it. No, definitely. Samir Rizvi can be a great asset. In the two matches that we have seen so far in this IPL, we haven't seen MSD coming out to bat. But, there is a constant visual that you see on your screens that he's just standing, he's just, looking at the game, he's just, exercising or looking at few of the players who are there on the ground, speaking to the other players. So that MSD effect is definitely there in the CSK camp, and it's going to be of really, really big importance for the team moving ahead in the tournament. Well, kind of.
I would just like to add one thing about Samir. Okay, so when he was bought by CSK, kind of uske baad you can continue. When he was picked up by CSK for that kind of an amount, I had a chat with his coach, who is also his uncle. Okay, and simple, very 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 categorically, he told me that यार बहुत सीधा लड़का है, बहुत डाउन टू अर्थ लड़का है, और सिर्फ इंडिया खेलना चाहता है, सिर्फ परफॉर्म करना चाहता है. सो दैट इज अ माइंड सेटअप ही हैज. He really got a very big amount, and obviously his dad was a property dealer, and because of some wealth issues, they had to, business thoda sa, it went haywire. Mom is a housewife, so वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. और 15-16 साल से तो क्रिकेट खेल रहा है ये लड़का. ही इज 20 एंड ही इज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 15-16 years. सो अंडरस्टैंड, कब कब से इन्होंने स्टार्ट करा हुआ है क्रिकेट खेलना. 4-5 साल की उम्र से स्टार्ट करा हुआ है. एंड यूज्ड टू स्टार्ट हिज प्रैक्टिसेस फ्रॉम मॉर्निंग 6, and that used to go till 7. So that is the kind of concentration he has, as far as his game is concerned, and that is probably paying him back, and it will continue to pay him. Yeah, definitely, it will continue to pay him, and you get such opportunities. You really need to bank on such opportunities. Samir got one, and he showcased what he has got. But we really, really need to see more of his side in the coming matches. Now, sports fans, saying respect to all the analysts who are still awake after watching. Okay, the snooze fest. Oh, we are definitely awake because Only we for are y'all. completely. What? Only What? for y'all. Taz? Ah, we Nothing. are awake for you all to let you know what all happened in the match. But it wasn't a snooze fest. It was, quite interesting at the very beginning because there were some great shots coming in from CSK batters, but also in the second half because not only from the bowler side, Kanav, we saw some great performances in the field. MS Dhoni ka wo catch, I think, what a catch! I really don't have any other words to, just define that wonderful catch that he took. Shankar us par wapas gaye. Then Rahane's catch. I don't know what has happened to Rahane in the first match against RCB. He sent Virat Kohli with that fabulous effort around the boundary rope, and then in this one, he sent goodbye to Miller with that catch. Now, what is not there in CSK camp? Is there anything that's not there? Fielding तो यार रहाणे जिंके रहाणे is probably the safest pair of hands that I can bet on in any position, slips, cover, at the boundary. If there's someone I can have on any of the busiest areas after Ravindra Jadeja. Obviously, Ravindra Jadeja is the best fielder that we have in the Indian camp. But after him, it's Ajinkya Rahane. I have rarely seen him drop catches. बहुत कम होगा. And MS Dhoni तो यार again safest pair of hands behind the wicket. Still till date, he's what, 41, 42. I will bank on MS Dhoni to always do the fastest stumping and always take these blinders. And I am happy at least fans are getting to see MS Dhoni in this sort of action because he's not batting. That has been, and the crowd has been shouting, we need Mahi, we need Thala, जो भी वो shout करते हैं. तो बैटिंग करते तो नहीं देख पा रहे, पर ये डाइव देख के ना वो एक स्माइल आ जाती है, वो खुशी खुशी घर जाते हैं. We got to see MS Dhoni take I a was blinder. reading somewhere वो जो क्लिप का जो स्क्रीनशॉट है वो कहीं पे पोस्ट हुआ है, that has record likes on it. कुछ कहीं पे तो Yeah, कुछ I yeah, was yeah. reading somewhere. Yeah. That The whole dive. social media platforms are up with that Yeah. one video, that dive video. People are watching it on loop. MS धोनी यार, MS धोनी हाथ ऊपर करते हैं, उसकी फोटो पे इतने लाइक्स आ जाते हैं. वो हिम डाइविंग एंड टेकिंग सच अ ब्लाइंडर, ऑब्वियसली इट हैड टू get all the attention on social media. I mean, something that social media we'll be talking about throughout the week, something we can use in Crick Sunday. At the Sunday, you'll see in that video this Kanav, dive. you were talking about his knee भाई, ऐसे ऐसी छलांगे मार रहा है भाई, नी भी सब ठीक है, सब परफेक्ट है. सब परफेक्ट है. जिससे बॉलिंग प्रैक्टिस चल रही है, डाइव्स मार रहे थे, टचवुड है. आई मीन इट्स गुड न्यूज फॉर द सीएसके फैंस हियर, बट आई वुड रियली लाइक टू सी हिम बैट बिकॉज आप 6 मैच बैट नहीं करोगे, एक क्रूशियल मैच में आपकी बैटिंग आ जाएगी और आपके पास बैटिंग मैच प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी. तो व्हेनेवर ही फील्स ना कि यार इट्स अ कंफर्टेबल Yeah. सिचुएशन, चेजिंग करते हुए टारगेट इज इन रीच, आई कैन गो अप, ही शुड गो अप, या पहले बैटिंग करते हुए उनको लग रहा है कि ऑलरेडी काफी रन्स पड़ गए हैं, मैं फटाफट जाके क्विक 20 या क्विक 25 मार सकूं, तो ही शुड कम आउट एंड बैट, नॉट जस्ट फॉर द फैंस. ठीक है, वो तो इमोशनल साइड है गेम की, दैट Yeah. ही दिस इज प्रोबेबली हिज लास्ट सीजन, तो ही शुड कम आउट एंड बैट फॉर द फैंस, बट आल्सो एज अ बैटर
who can play a crucial role in the playoffs if CSK, when CSK, if तो आता ही नहीं है CSK को लेके, when CSK makes it to the playoffs, they need MS Dhoni, the batter, doing well. But apart from it, as you can see on your screen, यार 42 years of age, इसमें 2007 के धोनी लग रहे हैं जो हेयर स्टाइल आया था. बट अगेन CSK एज ए फील्डिंग टीम, एक और रचिन रविंद्र से कैच छूटी बस, वो भी ठीक है, उन्होंने जज थोड़ा कर लिया, लेकिन उसको फिर उन्होंने कवर अप भी किया एक बहुत अच्छी कैच लेके अगले ही ओवर में. सो ऑल इन ऑल, अ गुड फील्डिंग टीम, अ गुड बैटिंग टीम, अ गुड बॉलिंग टीम, अ गुड IPL टीम. 7th ट्रॉफी, 6th ट्रॉफी, 7th ट्रॉफी, sixth trophy. 6th ट्रॉफी, 7th अगले साल, चलो 7th अगले साल. मतलब गिव अप कर दिया हमने, RCB के लिए गिव अप कर दिया फिर से. नहीं, वो मैं पहले प्री सीजन कर देता हूँ, वो मैं प्री सीजन कर देता हूँ, मैं पूरी सीजन से एंजॉय करता हूँ. RCB को गिव अप तो मैं प्री सीजन कर देता हूँ, उसके लिए CSK की जरूरत नहीं है. बट नहीं, No, but I have CSK and Mumbai are two very strong teams. there is something that CSK need to थोड़ा सा उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. दीपक चहर and देशपांडे are really wavered, and even Pathirana today, I just felt they're bit wavered, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका वाइड, बहुत ज्यादा वाइड है अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स. स्पेसिफिकली पथिराना का एक वाइड गया था, दैट वो लेग साइड का वाइड था, एंड दैट वाज रियली रियली फार. सो कहीं ना कहीं कंट्रोल, आई जस्ट फील चहर एंड पथिराना आर नॉट रियली एबल टू कंट्रोल द बॉल राइट नाउ. वो थोड़ा कंट्रोल पे काम करना पड़ेगा. वो छुप रहा है क्योंकि आप, हाँ स्पेशली चहर, वो छुप रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको विकेट्स भी मिल रहे हैं, आपके पास स्कोर भी इतना होता है, तो वो इतना ध्यान उस जगह पे जा नहीं रहा. But the moment this score is around 170, 160 on this kind of a track, no, वो कहीं ना कहीं impact डालेगा. No, actually, I think CSK is one of those teams jahan pe they believe in backing the players. But the day they'll realize that, nothing's coming out, even after backing these players, they'll leave the player out and they'll bring a new player, and then they'll form the team around that player as well. So this team really knows how to stick to their 11, make some changes here and there, and then come back stronger. So I think that might be somewhere at the back of their mind. But given that they have won the first 2 matches, they might be in that zone that, we'll stick to it and move with the same 11 at Chepauk at least. ताउस भाई, डेवॉन कॉनवे को कैसे खिलाएंगे? कहाँ खिलाओगे? क्यों जरूरत है यार, अभी तो नहीं है. एग्जैक्टली. फोन करेंगे, आप न्यूजीलैंड में ही रहिए अभी के लिए, हमारे पास आपके रिप्लेसमेंट बुला लो, क्या जरूरत पड़ती. भाई डायरल मिचेल को ओवर डला दिया, ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, ये कभी होना था, बट इतना जल्दी वो विकेट भी ले गया. देखो, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट यार, 14 मैचेस, कोई ऐसा नहीं कि सब 14 मैचेस खेल लेंगे. एक कहीं ना कहीं तो मिलेगा किसी को. नहीं, बट ताउस भाई, you expect Rachin Ravindra to play all the 16 matches, in fact 16 17 जितना भी होने वाला है. would love to see him. But would love to see him again. और भी आएगा जहां पर वो फॉर्म उनका चला जाएगा. Yeah. I believe if it does really well, they might go on to retain him. अगर 5 players आप retain कर पाओ अगले मेगा ऑक्शन से पहले, अगर वो लिमिट बढ़ जाए 3 से 5. No, so 3 more innings of that sorts and he's getting retained next year. उसको नहीं हटाएंगे फिर ये. He does well in this season, so he's the future of CSK. Kanab, the point here is understand this, and also understand this. Santner के पास ठीक है, मतलब वो उतने नहीं उनकी एज है, बट कहीं ना कहीं एज एक फैक्टर आएगा. He is someone who can also give you a left arm spinner का ऑप्शन. टॉप ऑर्डर में ऊपर बैटिंग करेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर 4 ओवर डाल सकता है, तो व्हाई वुड यू रिलीज हिम? और अगर ऐसे परफॉर्म कर रहा फिर तो क्या ही प्रॉब्लम? 20 करके जा रहा, तो जरूरत ही नहीं है. कप्तान भी हो सकता है, पता नहीं, यू नेवर नो. इंडियन कनेक्शन भी है भाई. अरे करने दो गायकवाड़ को यार कप्तानी भाई. ताउस भाई 2 मैच जिता दिए उसने. अभी तक धोनी ने कप्तानी की है, कोई भी बोल रहे उससे. अभी DRS भी धोनी से, अभी तो 2 मैच हुए. वो धोनी का DRS गलत हो गया. धोनी का ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया. धोनी का DRS गलत हुआ है इस बार, लेकिन but at the end of the day, Taus, imperfection is beautiful यार. You can't be perfect. और वही तो. अरे ये सही है. No, okay. Now we have discussed about CSK. There might be a lot of ifs and buts के okay ये गलत हो गया, ये सही हो गया, but
At the end of the day, we all know that CSK have won this match by 63 runs. It's the biggest victory that has come for CSK in this IPL and for any other team in this IPL 2024. We saw some close matches as well, but it's a big one for CSK. Kanav, I'll come to you, but quickly let me tell all that Shivam Dube has been awarded with Player of the Match award. And when he was given the mic after receiving that award, he said that this franchise is very different. CSK gives me freedom that I didn't get earlier, and that's why I want to play my level best for this team and play freely. They want me to play with the highest strike rate, and that's what I'm doing for this team. And I think that sums up everything where we began our live session. Taus began it with Shivam Dube's comment only. उन्होंने कहा था कि CSK कितना freedom देती है, CSK change कर देती है. Kanav also said that we too began our live session on that only. And Dube's comment sums it up for all of us. Kanav, I'll give the last comment to you and then we'll wrap it up. No, I just wanted to say this is also the biggest defeat margin for GT in their history, in their last 3 or 2.5 seasons, so to say. They have not lost by 30 plus runs while, chasing. So I just and also something that I really liked from GT's captain Shubman Gill was his acceptance of the defeat. You know, the way he said that we were completely outplayed. We did not bat well in the power play. Bowlers will also have to learn few things. And he also accepted that I'm very new as a captain. I'm just, getting all experiences. Perhaps I learn a lot moving ahead in the tournament. I think that's very good from a player, when you But he's not, but Surama, he's not looking good as a captain. I mean, that वो impact अब बैटिंग पे आना शुरू हो गया है. We were talking, me and our producer were talking off the cameras also ना, कि just switch off that captaincy वाला button and become that Shubman the batter. आप वो नहीं कर पा रहे. That is too soon. Yeah. To expect the body language. The body language. I'm not taking. I'm not talking about the defeat. क्या है जो भी है ठीक है, मोमेंटम साथ में होता है. पिछला मैच जीत कर भी आए, कैसे भी जीते जीत कर आए. I'm talking about the body line in both the matches. I just feel there's a bit of a kind of a nervousness right now in Shubman Gill. Shubman Gill the captain. बैट्समैन में नहीं है, बैट्समैन का कोई प्रॉब्लम, वो आज नहीं कल 50 कर देगा, अगले मैच में 50 कर देगा, 100 भी कर देगा. You would expect somewhere to lead a franchise in IPL, that to Gujarat Titans with 2 successful IPL seasons already. You would expect for the nerves to settle in the first 5 or 6 matches. थोड़ा टाइम लगता है, लगना नहीं चाहिए. Exactly, वही मैं बोल यार, ऐसे तो 5 टाइटल वाला CSK को लिए ठीक है. I understand वहां पॉइंट आएगा कि I understand कि MS आएगा. Exactly आएगा, but I am talking about the vibe that you get कि एक बंदा ठीक है, उसको he's calm and composed. Rituraj Gaikwad looks really calm and composed. I understand he will have a Dhoni if there is a problem, if he encounters a problem on the field. वो गिल के पास वो लग्जरी शायद नहीं है, लेकिन एक you can rizig and you can, ऐसा हार्दिक पांड्या भी नए कैप्टन थे ना, क्या एक्सपीरियंस था उनके पास भी. एक्सपीरियंस था, मुंबई इंडियंस का एक्सपीरियंस था, टाइटल जीतने का था, उसमें कैप्टेंसी का नहीं था. I think there are two things. I think let's just wrap it up with 2 things. I think one thing that Kanav also mentioned too soon, perhaps we can discuss about it in much more detail once we see 7 odd games, and that will lead us to half of their tournament, and then we can pretty much analyze what Shubman Gill has done or hasn't done. And I also feel that not only Gill but also Ruturaj Gaikwad and all the young captains, they'll always go through that tunnel of criticism and appreciation, and they deserve that because they are new to a team as a captain and everything. But what I feel is why I mentioned about Gill's comment, I think the acceptance is very important. You accept that I have done some mistakes. 60 रन से T20 मैच हारोगे तो accept तो करना पड़ेगा ना. No, but there are a lot of such captains. I won't name you were outplayed. So you were outplayed totally with the while you were bowling. While you opted to bowl first, and then you considered 206. वो 170 180 we all predicted in the live session. Everyone predicted 180 190. Tausbhai was the one who said 200. आपने अंडरस्टैंड दिस, एक कैप्टनसी के रोल होता है ना, आप एक फर्म डिसीजन लेते जो पिछले मैच में हुआ, जैसे उमेश यादव ने रन खाए, आप बैठा देते बाहर, could have got someone else in. That is what I'm talking about. Don't be nervous. Now this is your team. You have to take the decision and take it firmly. That is it. And perhaps he might.
पहले ही कहा था कि भाई ही वाज नॉट रेडी फॉर कैप्टेंसी. उसको सडनली हार्दिक पांड्या की हुआ, Yeah. सडनली आपको दे दिया गया. नाउ यू आर Yeah. क्लूलेस कि अब मैं क्या करूं. तो Nehra is not a Actually, leader. Taus, Nehra there are can be a two smart different coach, cases. but he was not a leader. This guy, Yeah. Dhoni is a leader, and वो अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है. वो मैं कर रहा है, एमएस help कर रहा है. नहीं, मैं वो ताऊ भाई different उधर से मैं है, कंपेयर नहीं कर रहा. Gaयकवाड़ नो पास, आई एम उनके नॉट, पास नहीं है मैं क्रिकेट उधर से कोई भी. कंपेयर नहीं कर रहा. मैं वही बोला ना कि उसके पास वो लग्जरी है कहीं ना कहीं. दैट आई एक्सेप्ट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉडी लाइन. क्या है, दिखता है फेस पे कि कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस है. दैट इज व्हाट आई एम This is the सेइंग. first time he was facing defeat as a captain. So to get that feel in and then how to react, he will learn eventually कि यार ठीक है, पहले हारते कैसे as a captain और हार गए तो अब इसको वापस कैसे आते हैं. So it will take some time. Actually, I do agree those with Samir. learnings will थोड़ा come, body yeah. language, पर वो again as I said, it's too soon to Yeah. judge by body language. Probably. But I get his point. I get I his No, gave point. up on I'm not I confident. gave up on I'm not Srikanth already. I'm not giving up on him, but I'm not really confident about him, being the captain. This is what my take Also, is for now. if we just if we just bring out the cracks, Taus, Kanav and Soumya, I think there are two things. One thing that Taus mentioned, that Shubman Gill might have gotten, like a surprise that you have to captain the team. On the other side, we saw and we heard how Ruturaj Gaikwad said that the hint was given last year only, but and I was in some match simulations as well. So there will be a lot of perceptions and opinions about all these young captains that we're talking about, and perhaps the mid of the tournament will be the right place where we discuss about these young captains. For now, let's just settle in with today's match, as CSK have won it by 63 runs. It's a huge victory for CSK, and great one for Ruturaj Gaikwad as a captain. It brings in a lot of confidence, and let's just gear up for the match tomorrow. That's SRH versus Mumbai Indians. It's going to be interesting because both the teams haven't won a first match. Those matches were very close matches. So it's going to be quite interesting. It's going to be again Pat Cummins watching Rohit Sharma on the field. Let's see what will happen in tomorrow's match. Thanks a lot, everyone, for joining with me, and we'll see you tomorrow. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.